Hello everyone. So today we are going to start with our next class, that is 7th. And I'm sorry for my voice. You need to bear with it because I have some throat infection. So that is why I was not uploading the classes. But I will try to be more consistent onwards because exam is approaching and I need to be more consistent. So this question was asked in TEE 2024 June. So the question was, what was the role of the trade in the emergence of the early state? So आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा that whatever class I took now, this is more or less related to it. So we need not I need not to elaborate more. You just need to listen to it and you need to just read it and you will understand it. Okay. So the trade played a vital role in the emergence of the early state by deriving economic growth. Obviously बात है किसी भी state के emergence के लिए there should be some economic growth to support the population and people's requirement. Okay, fostering social stratification and shaping political and administrative institutions. The development of the long distance trade networks, the trade network allowed them, like the societies, to acquire essential resources, specialize in certain industries and create surplus wealth. This in turn led to the establishment of the centralized authority and complex social hierarchies. Okay, so in this discussion we will elaborate the political, economic and the social structure which led to the trade exploration and everything. Okay, so economic foundation of the early state. So first point is the shift from the subsistence to the surplus economy. So here we will read जो हमारा एग्रीकल्चर था, पहले लोग सिर्फ अपने सब्सिस्टेंस के लिए फार्मिंग कर रहे थे, बट नाउ सिंस इकोनॉमी ग्रो कर रही थी तो नाउ दे वर ग्रोइंग द क्रॉप्स फॉर द सरप्लस इकोनॉमी टू सपोर्ट द मोर पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी. ओके, सो इन प्री स्टेट सोसाइटीज मोस्ट कम्युनिटीज वर सेल्फ सफिशिएंट, relying on the subsistence farming and local production. However, as populations grew and need diversified, so there was an increasing demands for the goods that were not locally available. This demand fostered the growth of the trade, enabling the exchange of the essential goods like metals, agricultural products and the luxury items. So as we know कि not everything can be locally available, right? So for that matter we need to export something and we need to import something. ओके, सो हियर ऑल्सो जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई वो इसलिए हुई क्योंकि लोगों की हमारी जो नीड्स थी वो बढ़ गई थी. अब लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो लोकली अवेलेबल नहीं थी, उसको वो एक्सपोर्ट करने लग गए थे, इंपोर्ट करने लग गए थे. एंड कुछ चीज़ें जो यहाँ पे अवेलेबल थी वो दूसरे जगह के लोगों को अगर मान लो ज़रूरत है तो वो उनको एक्सपोर्ट करने लग गए थे. ओके, सो ट्रेड लेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द सरप्लस गुड्स विच हैड अ ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमीज. So surpluses, particularly of food, allowed societies to support larger population and develop urban centers. ओके, सो जब अर्बन सेंटर्स का जब इमर्जेंस होगा तो ऑब्वियसली बात है दे कैन नॉट ग्रो द क्रॉप्स, राइट? सो दे विल बी डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरलिस्ट. ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारी क्या होगी, स्टेट का जो फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे इमर्जेंस ऑफ क्या होगा, टैक्सेशन, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड द मार्केट्स. एंड ये सारे क्या एलिमेंट्स होते हैं? सो दे ऑल आर द की एलिमेंट्स ऑफ द अर्ली स्टेट फॉर्मेशन. ओके, स्टेट्स developed to regulate and oversee the flow of the goods, and the rulers then control these resources as the means of the consolidating their powers. Okay, next, specialization and the growth of the urban centers. Okay, so as trade networks expanded, regions begin to specialize in the production of the specific goods. For example, Mesopotamia became known for its textiles, Egypt for its grains, and Anatolia for its metals. This economic specialization increased interdependence between the regions and promoted the growth of trade hubs. For example, अगर मान लो 3 दोस्त हैं and they all are expert in something. Okay, so obviously बात है कि they all will be interdependent. अगर उनको grains की need है तो वो मान लो इजिप्ट से मांग लेंगे, है ना. अगर उनको पर्टिकुलर टेक्सटाइल की नीड है, सो क्योंकि मेसोपोटामिया उसमें एक्सपर्ट था, तो इस तरीके से ट्रेड का हमारे क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है एंड सब एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं. ओके, अर्बन सेंटर्स इमर्ज्ड एज अ फोकल पॉइंट फॉर ट्रेड वेयर आर्टिजन्स, मर्चेंट्स एंड द लेबरर्स used to produce and exchange the goods. Cities like Uruk
Okay, Mohenjo-daro became not only economic hubs but also political centers where rulers exerted control over trade and resources. The success of these urban centers was directly tied to their ability to manage and regulate the trade, and in this way making them essential for the emergence of the early states. Second, social stratification. So here the social part will be starting, like social stratification and the role of the elites. So in this, the first point is accumulation of the wealth through trades. Obviously बात है, the elite class and the trading communities will be more like उनके पास ज़्यादा पावर्स होंगी क्योंकि उनके पास वेल्थ है, उनके पास सरप्लस चीज़ें हैं. ओके, सो trade contributed to the rise of the social hierarchies by concentrating wealth in hands of few. Those who control access to the valuable resources such as copper, tin, and luxury items became powerful elites. These elites were often associated with religious or political institutions, using their control over trade to enhance their authority. In many early states, the ruling class managed long distance trade expeditions and maintained control over key resources. They financed large scale trade ventures and established alliances with foreign regions. The accumulation of wealth through trade allowed these elites to invest in public works such as temples, irrigation systems, and fortifications, further solidifying their power and legitimacy. So here we can see कि जो trade था, ट्रेड के थ्रू में जो एलिट क्लास थी, लाइक बहुत जो लाइक ऑब्वियसली बात है एलिट क्लास में बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास पावर्स होती हैं, है ना, एंड मेनली दे वर एसोसिएटेड विद सम रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप, ठीक है, जो कि रिसोर्सेज को मेंटेन करते थे. उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशंस बना रखे थे फॉरेन ट्रेड के साथ. ऑल्सो दे वर कंट्रोलिंग द रीजन ऑफ द ट्रेड. इस तरीके से वो अपने लेजिटिमेसी को मेंटेन कर रहे थे. द राइज ऑफ अ मर्चेंट क्लास. While the ruling elite controlled large-scale trade, a professional merchant class also emerged, playing a crucial role in facilitating commerce. Merchants specialized in navigating trade routes, managing goods, and negotiating exchanges between regions. Although they held a lower social status than the elites, merchants were vital to the economic prosperity of the early states and gained influence due to the role in expanding trade networks. So here we can see कि जो elites हैं उनसे थोड़ा lower status था merchant class का, but ये क्या कर रहे थे, they were playing a crucial role. कैसे, they were specialized in navigating trade routes, they were managing the goods and they were negotiating between the regions. Like अगर मान लो एक region में जिस चीज़ की नीड है वो दूसरे रीजन में है और दूसरे रीजन को जिस चीज़ की नीड है वो पहले रीजन में है, तो दे यूज टू नेगोशिएट बिटवीन दैम. द एबिलिटी टू अमास वेल्थ थ्रू ट्रेड अलाउड बोथ एलिट एंड मर्चेंट्स टू डिफरेंशिएट themselves socially. Access to the luxury goods became a marker of status, contributing to the development of the social stratification and reinforcing the power of those who controlled trade. So, third, political and administrative development. So, first is bureaucracy and trade regulation. As trade networks became more complex, early states developed political and administrative systems किस लिए? To regulate and control the commerce. States established bureaucracies to oversee taxation, resource management, and the protection of the trade routes. For example, in Mesopotamia, temples and the palaces served as a central point for collecting, storing, and redistributing trade goods. These administrative institutions were essential for maintaining the flow of resources and ensuring the state's economic stability. So here we can see कि जो पैलेसेस थे, ओके, एंड जो टेम्पल्स थे वो एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट था जहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड जो भी गुड्स थे उनको स्टोर किया जाता था, उनको कलेक्ट किया जाता था, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. इस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का वर्क कर रही थी और फ्लो ऑफ रिसोर्सेज को मेंटेन कर रही थी और इंश्योर कर रही थी कि जो स्टेट है उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे. Next, to manage trade effectively, early states developed system of standardized weights, measures, and currency. This standardization was crucial for facilitating exchanges and maintaining trust between distant
trading partners. It also required a level of administrative oversight, which led to the growth of complex state bureaucracies that were responsible for enforcing trade laws and regulating commerces. So here you can see कि हम अगर जो स्टैंडर्ड जो वेज ये सारी चीज़ें जो थी जो मेंटेन करती थी वो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देख सकते हैं. तो यू कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल. ठीक है. लीगल सिस्टम्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेड. The expansion of the trade networks also required the development of legal framework to ensure fair dealings and protect merchants. ऑब्वियस सी बात है अगर किसी रीजन में लॉ इन्फोर्स्ड नहीं है तो बहुत ही अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस का लोग यूज़ करेंगे और उससे किसी ना किसी को डिसएडवांटेज होगा. तो हेयर वी कैन सी कि यहाँ पे एक एक्सपेंशन ऑफ लाइक लीगल फ्रेमवर्क देखा जा सकता था. अर्ली लीगल कोड सच एज द कोड ऑफ Hammurabi in Mesopotamia, including specific laws related to trade, contracts, and the protection of the merchants. These legal systems were vital in maintaining order and fostering a stable environment for trade, which was crucial for prosperity of the early states. So, in Mesopotamia, you can see that there was a code of Hammurabi. किस लिए? To maintain some specific laws related to trade, contracts, and protection of the merchants. In addition to the legal protection, states often invested in the infrastructure needed to support trade, such as roads, ports, and rest stop for traders. These investments help secure trade routes, enabling merchants to transport goods safely across long distances. And the ability to protect and control trade routes was a key element for state power. So कोई भी स्टेट जो भी ट्रेड रूट्स को मेंटेन करता था उनके पावर मतलब उनके पास बहुत ही ज़्यादा ही पावर होती थी स्टेट को मेंटेन करने के लिए. As it allowed rulers to monopolize valuable resources and generate revenue through taxation and tribute. Next was diplomacy and military expansion. Trade also influenced the political relationships between early states. Many states sought to control key trade routes and resources through diplomatic alliances or military conquest. So, for example, the Egyptian Pharaoh expanded their influence along the Nile to secure trade routes to Nubia, a region rich in gold and the other valuable commodities. So अगर ये question in case आ जाता है which has a higher chances क्योंकि ये PYQ है तो you can also give some examples along with the answers. तो इसमें क्या होगा आपको एक edge मिलेगा कि maybe the examiner get impressed and give you more marks. Okay, so in some cases trade led to the peaceful exchanges and alliances between the states as rulers recognized the mutual benefit of the commerce. However, the competition for control over trade routes and the resources often led to the conflicts. So sometimes वहाँ पे क्या होता था अलायंसेस के थ्रू वो कंट्रोल कर लेते थे. समटाइम्स मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी हो जाता था. क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सब उसको रीजन को कंट्रोल करना चाहते थे. कोई भी किसी और के इन्फ्लुएंस में ट्रेड रूट्स को नहीं देखना चाहता था. इसलिए मोस्टली इनके बीच में क्या होता था कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते थे. States that could effectively protect and expand their trade networks gained a significant advantage. कैसे? So both economically and the politically. Like economically अगर trade route को influence कर रहे हैं तो जो भी चीज़ें वहाँ पे export या import होगी उसका benefit मिलेगा. Politically अगर उस region को हम अपने अंडर रखेंगे तो military conquest में हमें एक edge मिल सकता है. क्यों? क्योंकि अगर हम उस trade route को रोक दें एंड अगला अगर कोई कंट्री है जिसका बेनिफिट होता था उस ट्रेड रूट से तो ऑब्वियस बात है पॉलिटिकली उनके लिए वो डिसएडवांटेज होगा उनके स्टेट के लिए जिनके पास वहाँ का कंट्रोल नहीं है. Let's move to the conclusion. So, trade was a fundamental driver in the emergence of the early states, contributing to their economic, social, and political development. It enabled the accumulation of the surplus wealth, promoted specialization, and facilitated the growth of the urban centers. आप conclusion को इतना भी छोड़ सकते हैं because it is reflecting every discussion we did earlier.
Okay, also if you want, you can like also write that it played a crucial role in the rise of the social hierarchies as elite and the merchants gained wealth and the influence through their control of valuable resources. Additionally, the complexities of the trade networks necessitated the development of the political and administrative institutions to regulate commerce and protect trade routes. Ultimately, trade not only connected distant regions but also served as a catalyst for the rise of the centralized authority and the emergence of the early states. इवन दो यहाँ पे हमने दो तीन तरीक़ों से हमने अपने बातों को फॉर्म किया कि ट्रेड रूट्स कैसे हेल्पफुल थी, बट आप अपने आंसर से डिराइव करके जो भी आपको मेन पॉइंट लगे उसको आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं. ओके, जो लास्ट की जो लाइन है दैट इट सर्व्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर नॉट ओनली टू द राइज ऑफ द सेंट्रलाइज अथॉरिटी बट ऑल्सो द इमर्जेंस ऑफ द अर्ली स्टेट्स, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं सो दैट एग्जामिनर को एक इंसाइट मिले दैट व्हाट यू डिस्कस्ड अर्लियर. क्या होता है 3-4 पेजेस जब आप पढ़ते हो तो समटाइम्स आपको इंसाइट नहीं हो पाता, आप भूल जाते हो, तो एग्जामिनर को तो कितनी कॉपीज चेक करनी होती है, राइट. सो कंक्लूजन में थोड़ा आपको इंसाइट अपने आंसर्स का देना चाहिए दैट व्हाट यू हैव रिटन. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे. Please subscribe to the channel and share it with your friends and anyone who needs it. So thank you so much.